ये काम होगा बस। हाँ ये कमीने हैं। जो टू व्हीलर रहती है सामने बस रहती है, समझ नहीं आता क्या करोगे। ये देखो पाकिस्तान का मैच जोहानिसबर्ग का ग्राउंड 2007 का फाइनल। यहाँ हर बॉल पर तो गाड़ी को भी सही अरे जहाँ जा तो मैं इसको हो जाता है। इतने सिलेंडर लेके जा रहा है। धीरे धीरे भी चला रहा है। धीरे तो चला रहा है, उसको राइट लेन में नहीं रहना चाहिए बस। बस वाले से बस ना चलेगा, टू व्हीलर जैसा चला रहा है वो। अरे अरे गेम वाली कार चाहिए। झूम झूम कैसे मारते पीटते चले जाते अगल बगल सबको। मुझे चेस्ट में नॉर्मल पेन। कुछ करो उसके लिए, क्या करोगी? सोचा कुछ? बात करोगे, चैट करोगे? से नाक खुल गई तो कान चल गई।
पर टाइम पता। यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। हाँ यहाँ जाके सांस है। हाँ, जो कि कंजेस्टेड लगता था पहले, हाँ अभी ये कम लग रहा है उससे, वो उतना खराब था। है ना? हाँ ना, बहुत ही। अब तो दोबारा कोई शादी में बुलाया तो जाऊंगी। क्यों? तभी क्यों नहीं होगी? उधर तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, उधर? दूसरी जगह लोकेशन तो कब चाहिए जहाँ भी मिले जामुन और आम मेरे लिए रखना। अभी तक टाइम नहीं है। उन लोग को घर जाना होगा, फिर ऑफिस जाएंगे, तभी जल्दी गए मैं। जब तक नींद पूरी नहीं होती तभी नहा धो लो, फ्रेश फील नहीं होगा। थोड़ा तो होता होगा। थोड़ा ठीक है, 100% मुझे तो नींद का बहुत इम्पैक्ट है। चल ही क्यों रहा है? रोड में क्यों आते हैं? सीख रहा है। गलत गाड़ी में सीख पता कैसे चलेगा? ये जगह सही है। जेंजी कपल्स और जो पाच वर्षानंतर पार्शियल विड्रॉवलची सुविधाही उपलब्ध आहे. LICच्या प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसीबद्दल अधिक माहिती. In 300 meters at the roundabout, continue straight onto Gurudwara. कोई इसको जाने नहीं देता। पल के झपकता है आसमां, फरिश्ता की है तुझे, वो पूछते हैं रहती कहाँ मेरी माँ में रहती, उनको बता। पल के झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, खैरों के वहाँ तू है जहाँ मेरी माँ में रहना, यही है दुआ तू। कैसे उसकी तरह लग रहे थे, ड्राइंग बनाई है। मस्त बैठे थे, उसी में बैठे थे सब, एक ही फैमिली के होंगे। बड़ा मजा आता है लोग को देखने में, ऐसे पारिवारिक माहौल में रहते हैं। 93.5 रेड एफएम और रुद्राजसोबत सोहला उसमें नहीं लगा। वाहन विक्रीला जो काय जोर बघायला मिळतो आहे, ज्या काय ऐतिहासिक उंची आणि उच्च. इंट्रोड्यूसिंग सीजन 8 कल्याणी नगर में भी 19 मिनट आता तो तुलसी माला पहनी लड़की
जा इधर यार। जब लोग का रास्ता चेंज करते कितना मजा आता है ना, जैसे पगले लोग मिलते हैं, लोगों का रास्ता चेंज हो जाता है। हाँ बहुत। नहीं तो मैं तो कई बार क्या करता हूँ, अगर सिमिलर रास्ता हो ना हाँ। तो जहाँ जो रास्ते पे वो जा रहा हो उसका दूसरा रास्ता ले लेता हूँ। कई बार ऐसा भी करता हूँ उनसे बचने की। नहीं इधर ये जा रहा है, दूसरे में जाता हूँ, फिर पता चलता कोई और फंसता है, फिर दूसरा रास्ता पकड़ो, फिर दूसरा रास्ता पकड़ो। सेविंग समझ में आती, पर ये क्या अटैच लगाया है, ये क्या है डूडू? ये आम जिंदगी है कुछ ना, इससे मत वेस्ट करो, माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्या है ये? मुझे तो लगता है जिनकी गाड़ी, आम लोग हैं जिनकी गाड़ी साफ नहीं रहती, रहती है ऐसे। इनकी गाड़ी साफ नहीं होती ना, वो रहती है ऐसे, कितना ही पैसा दे दो। 104.2 मिर्ची लग से कनेक्शन लगाए रखिए। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। Turn right at Baba Saheb Ambedkar Chowk onto Dr. Baba Saheb Ambedkar. आम लगे छोटे छोटे, पुट्ट पुट्ट से, देखो कहाँ तेरे यहाँ थे, पुट्ट पुट्ट से लगे। हाँ बीचों बीच रोड क्या कोई नहीं तोड़ता, सोसाइटी में लगा दो, सब तगला कर देते हैं। फाइन लगता होगा रोड के आम तोड़ने में। कमर दुख रही है। कह दिया ना, कह दिया। अरे लेफ्ट लेना था। फर्स्ट प्रेगनेंसी, हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर, तुम दोनों की भलाई के लिए योगा क्लास में ज्वाइन कर लिया, पर बेबी को फ्लू प्रोटेक्शन देने के बारे में सोचा है? फ्लू प्रोटेक्शन मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए प्रेगनेंसी में फ्लू वैक्सीन लेना जरूरी है। तो अपनी और बेबी की सुरक्षा के लिए आपने फ्लू वैक्सीन लिया क्या? टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इंडियाज फ्लू प्रोटेक्शन।
success. Stop waiting because the best homes don't stay available. Turn left onto East Sampaji Road. After a great success of Towers A and B, now here is a new opportunity. Presenting Tower C, launching April 1st. Spacious 2 BHK homes near Mundwa, Koregaon Park, Kharadi and Magarpatta. Modern amenities, refined living. Think later and it's gone. Call 976-555-7459. Gulmohar Esteban, RERA registered. ऑटो वाली तो उसको छाट में पड़ा। कितने कबूतर बैठे हैं, क्या मजा आ रहा है उधर। खाना मिलता है, हाँ नीचे खाना देते हैं। पंचुअलिटी दिखाओ, ये तो मेरा स्किल जज किया जाए। ट्रक के आगे आ रहा हूँ, ट्रक के भी आगे आ जाऊँ तो ठीक है। किसका ग्रीन है? उधर जाना है। हाँ जब तो जा रहे मुझे रिस्क है ना, कार है, पता नहीं ग्रीन किसका, किसका काटना किसका नहीं। वो पता रहता तो कर सकता हूँ ना। हाँ इनका ग्रीन है, निकल लेते हैं इनके साथ। कार वाला राइट लेगा थोड़ा। देखो गाड़ी आजकल ऐसे ही चला मोड़ रहा है। मैं पहले सोची डॉगी बैठा हुआ छोटे छोटे बच्चे कितने से आने ऐसे उस दिन जो खाने आई थी रेस्टोरेंट में, मम्मी बच्चे थे, इसके पानी पूरी खाते हैं तो ऐसे बैग उठाई थी, ऐसे आंटी बनी थी थोड़ी सी छोटी बच्ची, पूरा डेरा दे रखी है। आधुनिक तो बच्चे इसलिए करती है।
उधर कैमरे लगे तो चालान कटता होगा। हाँ तुम्हारा कट जाएगा चालान। चांसेस तो है। ये कहाँ से जा रहा है? इसको लग रहा कुछ जाने देगा। Right left onto National Highway 55, then turn left after Northern Gallery. जाना ही नहीं है जहाँ गाड़ियाँ जा रही है। फक देम ऑल। भाई ऐसे चोमू लोग। नो ट्रैफिक नो सिग्नल। अपने को वो रास्ता दिखा गूगल मैप्स जहाँ कोई इंसान ना वो रास्ता दिखा। ज्यादा टाइम लगेगा चलेगा वो दिखा। बच्चों मुंह को मत दिखा। देखने जा रही है। हो गया खत्म आज का। अभी तो तुम्हें लौटना भी है। अंधे उसकी जा रही थी। सब रुक गए। क्या करोगी? छुट्टी? तो कुछ और इलाज करो। फिर सर दर्द के काम कैसे करोगी? मतलब लॉगिन कैसे करोगी? नो माथे में नहीं हो रहा, अंदर हो रहा सर। ठीक होना है कुछ तो मैं करके। बस सर दर्द हो रहा है, उसके आगे भी कुछ करना नहीं। कैन डू इट। मेरी पुन्नू सबसे महा में कर लेगी। यहाँ पे याद है ऑटो चल गया था बच्चों के साथ बैठा हुआ, उसमें ड्राइवर नहीं था। यहीं लगे। यहाँ पर था। अच्छा आ रहा एक बच्चा उतरा जल्दी जल्दी। कितना बहादुर बच्चा था वो। वहाँ के सब थे क्या भगा था ऑटो वाले। कोई तो बोले थे ब्रेक लगाओ। मैं सोच रही थी ब्रेक लगे ऑटो में कैसे ब्रेक लगाओ। ब्रेक ही लगा के तो गया होगा है कि नहीं। वेरी गुड। ढलान से ढनक गया। ब्रेक लगा के नहीं किया था तो वो नहीं होना चाहिए था, उसको मूव नहीं होना चाहिए था। फिर अच्छा चालू करके से चला गया। कुछ तो मिस हो गया मुझसे। सारे बच्चे कितनी जान पे आ गई होगी उनको। छोटा पिद्दी से बच्चा उतरा और इतना बड़ा ऑटो रोक रहा था। ये कौन सी गाड़ी चली आजकल? छोटी सी नैनो की बहन लग रही। एक तो 2 लोगों वाली भी देखी थी मैंने। इसकी बाइक खराब हो गई। एक फोन पे लगा, दूसरा फोन चेक कर रहा है, दूसरे कान पे
अनबेरेबल सिचुएशन है, बहुत अनबेरेबल। ग्रीन सिग्नल में नहीं जा सकते तुम, है तुमको रेड में ही जाना है, ग्रीन में नहीं जा सकते, रेड में जाओ तुम। मुझे था तो वही था, एक कान पे लगाया दूसरे ढूंढ रखा है। करोड़ों की डील खराब हो जाएगी। कितने पेड़ है, मस्त लग रहा है। मुझे लगा गिरने को बोलने के, तो ऐसे ऐसे देखने लगी। गिरने को हाँ, क्यों? कितने पेड़ हैं? नहीं हाँ, टॉमी दूसरों के घर पॉटी करा के भाग जाता है। फिर घर निकल जाओगे। ऑफिस जाऊंगा उसके बाद, घर के बाद। रिजॉर्ट इतना घटिया था ना, नहाने लायक का मन नहीं था बिल्कुल। क्यों आप जाना घर लू लगवाना? कौन सा मैं हूँ हाँ तंग करने? तुम्हारी वजह को छोड़ के जाता हूँ मैं। हाँ पहले चले जाते। और कुछ भी बोलते हो तुम मेरे बारे सही में, बोलती हूँ। कुछ भी बोलते हो तुम। तुम बोले भी तो तुम्हारे साथ काम करना ही ले लिया सर। इतना इंग्लिश वर्ड बोले थे एकदम। एक बार बोले भी तो घर में रहता हूँ तो परेशान करते हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गिर जा, आजा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बहुत इधर से वो लोग, इधर से ये लोग। आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। यही गाना भी। आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्या बीच में ठेला लगा के खड़ा हो गया। 9:42। यही वाली गाड़ी थी क्या? बड़ी अच्छी थी ये, नहीं एकदम ये जो बगल में। हाँ यही ऐसी थी। वो तो एकदम बाइक जैसी थी। या तो आदमी अच्छा चला रहा होगा, कपड़े पहन के और अच्छी लग रही होगी। था तो पैटर्न कुछ ऐसी है। महंगी आती होगी। कितनी बातें सुबह सुबह। Right at Vital Chowk onto Senapati Baba. Then turn left onto Namdev Villa Sarojji Park. लगा उसका और आ जाएगा। नहीं अच्छा रहता है इधर से भी। यहाँ से ज़्यादा इजी पहुँच रहा हूँ, वहाँ से बहुत सिग्नल फंस जाता है ना। मैंने भी नोटिस किया, यहाँ से पास पड़ता है ना, वहाँ अंदर घुसो फिर इतना लंबा अंदर घुसो। मेरा चमू आज खोल के चमू बोलूँ क्या? चलो 5 मिनट है जाने के लिए। नंबर प्लेट भी नहीं है। चमड़ी लाइन मार रही लड़कों को। चलो मैं
candidates fail. Okay, of course, South Kerala, it is not a bad story for BJP in the South too, because now already BJP senior leaders are in Chennai to have a conversation with the. In 400 meters, turn left onto Karan Tamanna Kusalkar Road, Lekki Road. In 600 meters, turn left onto Ganesh Kindra, Pune University Road. The TVK to see what kind of role the party can play in the formation of the government, because if Vijay's party doesn't cross that magic mark, there is a possibility of AIDMK. So AIDMK is a constituent of BJP-led NDA. So the BJP wants to play a key role. Vijay cannot join hands with DMK because his party's fight is against DMK in the state. So then he says that ideologically I am against. He never said that the same thing about AIDMK. One thing is BJP's attempts to be the alternative to the Dravidian parties in Tamil Nadu, that has failed. That has failed. That's the only thing which has. What about Congress? Can TVK align with Congress? Because his father apparently has been saying that Vijay is ready to align with Congress. Can that equation change there? Yes, because Rahul Gandhi, if you remember, was in favor Turn left onto Ganesh Kindra Road, Pune University Road. of aligning with the TVK and wanted to break up with the JNK. It was Sonia Gandhi who intervened and spoke to Stalin, and the alliance was maintained. So there are different scenarios. Either TVK aligns with JNK, as I was saying. Number two, it aligns with smaller parties. DMK, PCK, all these parties, if they break away from their alliances, go with him. Congress could have been a possibility, a very natural possibility. I must give it to Rahul Gandhi here to have been excited enough to say that this is the way to go. It was state leaders. Many of the state leaders had advised him that this going with DMK will not do any for party in the long run. Riddhiman, as far as Assam is concerned, Gaurav Gogoi himself has lost. Last time he Continue on Range Hill Road for 800 meters. won elections, he said that the way the delimitation exercise was done in Assam had impacted many things. Similarly, if you can explain us the same arithmetic involving the assembly seats also, how does it impact the constituencies which have been redrawn? First, let me say that this mandate for Himanta is so massive that delimitation had very strong conflict, because when you're winning almost 3/4 of the seats, Almost 100, yeah. 3/4 of the seats in the state, then you have a wide popularity, and the support of the people is with you, largely with you. Having said that, yes, delimitation has played a simple glance at the electoral map of 2021 and 2026 will tell you that these constituencies which were bordering Bangladesh, and their boundaries have been redrawn in a fashion that just doesn't make any geographical sense. You will realize almost entirely, barring a few here and there, have turned south in this way. They were all with the Congress or AIUDF In 200 meters, turn right. earlier. AIUDF had Badri Nakol's party had 16 seats last time. It is down to 2 seats this time. Congress too has lost in these regions, and these are all constituencies which have been, where boundaries have been redrawn in such a manner that Turn right. one constituency has an overwhelming majority of Muslims, and it frees up 2 other constituencies with it, where Hindus become a majority. So what it does is that you can win this constituency with a great majority, doesn't matter, but these 2 other constituencies can be won by the BJP. And one simple counting I haven't gone through all the constituencies, but Continue for 1 kilometer. there are at least 8 constituencies in this belt which were with the AIUDF or the Congress and have been won by the BJP this time. Because as you were mentioning, as per 2011 census, there are as many as 34% Muslims in Assam itself. So polarization obviously worked there. But when the campaign was going on, we saw serious trouble. In 500 meters, turn right onto Netaji Subhash Chandra Bose Road. Is being levelled by Congress party against the sitting chief minister and his wife also. But that did not work, and he still managed to get 100 odd seats. Look, the thing is, in Assam, the concern, not from now, but for the last 40 years or more, has been this perception of a very large change in the democracy through illegal immigration from Bangladesh.
Kashmir's politics. So that issue becomes so important that the other small issues do not take it away. Let's coming to your home state, Kerala. Congress has done really well there. So, what are the plans for the Chief Minister? Who's going to be the Chief Minister there now? Yeah, with at least one state has given some kind of, good message for the opposition. Of course, Vijay is also not part of the BJP. Yes, now that Turn left onto Dhanuri Alandi Road. the UDF has crossed 100, it naturally, although KC Venugopal, the General Secretary, his name was there taking rounds very strongly, it looks like it will come up, come down to as a victory of those people who've been there in the stage and, created the narrative, built the narrative, built Continue for 1 kilometer. the party into such a strong organization after the consecutive 2 losses in 16 and 21. So V.D. Sadish is the leader of opposition. Of course, he would like to, because the informal conversation was like if it doesn't cross 80, it will be like between the 3. If it crosses 85, it will be the 2, and if it is 100, it will be V.D. Sadish. But obviously, in Congress party, the high command, the blessings is very important. But having said that, I must say that the Congress leadership also doesn't treat Kerala as like other states. Maybe in Karnataka, maybe in other places, Himachal, even Rajasthan, they might put their foot down. But in Kerala, the Congress's strongest organization setup is there. So, and its leaders are very self-respecting leaders, and they're very assertive. They wouldn't give away easily. Now, what happens to India Alliance now that DMK has lost Tamil Nadu, TMC has lost West Bengal? Where does the alliance stand? Alliance is weakened. They will have a challenge before them to they keep it going. Certainly, DMK is weakened, Mamta is weakened, RJD anyway has been weakened, Arvind Kejriwal is weakened. Yeah, in one stroke, they managed to weaken Arvind Kejriwal also and Mamta also. But what the regional parties will have to take a call whether they keep the alliance going, and the message would be to accept the leadership of the Congress. Oh, so that's a good news for Yeah. Congress. They do it, but the BJP is not going to make it easy for them. There will be corruption cases opened against the DMK leaders in Tamil Nadu. There will be corruption cases opened against TMC leaders in West Bengal, and there will be enormous pressure not to back the India alliance. Therefore, what will they do? The other option, of course, is for the Congress to decide we are going to go it alone. We have to get back to the drawing board. We've got to knuckle down to work at the ground level and try and revive the party. And regional parties then have to take a call what they do. Coming back to West Bengal again you all can chip in. Who is going to be the CM place there? Shobhito Adhikari was leading the fight from the forefront. The Union Home Minister was there when he filled in his nomination papers. There are other players also, but Vikas, who is leading the pack? Well, the victory is such that it could be Shubhendu Adhikari because he is known more to be a kind of a street fighter like Mamata. He also knows the TMC organization very well. Yeah, pluses and minuses. Given Bengal's style of politics, it is very much likely that many workers from the TMC will now try to join the BJP. That's what happens there. But it could also be a surprise because in the BJP you should never commit the fallacy of predicting chief ministers. It could be a symbolic kind of a chief ministerial appointment like maybe a Dalit woman or a tribe or what, it could be anything. So, but given the kind of battle that there has been there, I think Shubhendu has a fair chance because now they would also want to decimate the TMC at the ground level and he's perhaps the best. Yeah, I would agree that to ignore the claim of Shubhendu Adhikari is going to be very, very difficult given the numbers they have launched. And Himanta Biswa Sarma 400 meters at the roundabout, turn left onto Miller Road. is also a message. You have a tall leader there who's got a grip over the situation in Assam, with an action plan in motion, and he's delivered. And the reason is that the central leadership gave him autonomy of function. He moved in step with the Home Minister and other leaders, but because of his stature, he's delivered.
BJP leader, if you see, had come out in public after the exit poll to celebrate it. You Diptiman? I have been watching with great fascination the elections in Tamil Nadu because that was one place I couldn't put my hands on. Turn left to Lokmanya Tilak Road, Sapros Road, then turn right onto Lokmanya Tilak Road. Personally, and the TVK factor was too sharp and too in your face to ignore, and the way it is given, I had no such Turn right onto Lokmanya Tilak Road, Sapros Road. expectation. I was watching his rallies, I was Continue on Lokmanya Tilak Road for 1 kilometer. watching the gatherings for him, I was watching his statements like tremendous. For me, I think the memory of this round of elections would be the massive deployment of central forces in Bengal and the fact that that deployment itself became a matter for political debate with Mahua Moitra's repeated tweets, Ajay Sharma, the IPS, and this and that. So it will go down in memory as, an election about deployment. And no So that- violence though. Yeah. And Ganesh Kumar also was the Indian I feel if there is an image, it is Anurag Thakur eating fish. Okay. So interestingly, the Bharatiya Janata Party is also organizing Bhat fish parties in West Bengal, and here in Delhi they are also organizing Jalpuri parties for everyone. They have invited everyone to come to the BJP headquarters to have Jalpuri. Thank you all for joining and sharing your views with us. You were listening to Three Things by the Indian Express. Today's show was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by Shashank Bhargav and me, Icha Sharma. If you like the show, do subscribe to us wherever you get your podcast. You can also recommend it to someone you think may like it, with a friend or in your family. This is the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcast or write to us at podcast@indianexpress.com. In 400 meters, turn left onto National Highway 965 at indianexpress.com. This is the Catch Up on Three Things by the Indian Express, and I'm Icha Sharma. Today is the 5th of May, and here are today's headlines. Striking a defiant tone a day after the Trinamool Congress was routed in the West Bengal Assembly elections, CM Mamata Banerjee questioned why should she resign and asserted that her party hadn't been defeated in the elections. In a press conference flanked by party members Derek O'Brien and Abhishek Banerjee, she said, quote, "We have not been defeated. I will not resign. Question does not arise of me visiting." Turn left onto National Highway 965. In Raj Bhavan, unquote. Banerjee, who is yet to resign as CM, alleged that Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were directly interfering in West Bengal elections. She asserted that the next steps require discussion and the party will set up a fact-finding mission. Continue on National Highway 965 for 2 kilometers. Meanwhile, Tamil Nadu is preparing for something it has not seen in decades, a coalition government assembled as much through arithmetic as through adaptation, with early signs of an unconventional power structure, including plans to bring in former IAS officer Q. Sagayu through a by-election. With Vijay Thamaliga Vetri Kasangam
Is it moral under our constitution? For example, what if a religious practice is castes? Unquote. The Apex Court today also repped the Young Lawyers Association, advising them to work for the welfare of the bar and the younger members. The Apex Court questioned the objective of filing the present PIL from the Council of the Young Lawyer Association and also asked if the deity has a belief or conscience.